Good evening and Jai Hind. Humans share a bond with tobacco without realizing that it is a clever enemy in the face of a relaxing friend. Also, every time you light a cigarette, you are saying that your life isn't worth living. With this, I, Srishti Srivastava, a student of class 12, welcome all the dignitaries, our respected teachers, all our responsible students and parents present over here. Today, we have gathered here for a very meaningful purpose. We are here to create awareness about oral cancer. We are on a mission named Ashwa, War Against Cancer. We are glad to have our honorable chief guest, Dr. Asim Mishra, Associate Professor in Surgical Oncology. Sir is working in Homi Baba Cancer Hospital and Madan Mohan Malviya Cancer Center, Varanasi. Sir is making a great contribution in the cancer research area. We also have Ms. Sarika Singh, Chief Trustee of Ashwa. She has been a part of Vegan Globe to assist cancer warriors by encouraging them to take up vegan diet. Now, I would like to invite Mr. Swaraj Biswas to welcome our guests and throw some light on the event. Thank you, Srishti. I wholeheartedly welcome all. Suraj sir, you are on mute. Unmute yourself. Thank you. Start from the beginning. Thank you, sir. I wholeheartedly welcome all the dignitaries present over here today, all the dignitaries, our parents, our students who are gathered for the event today. Let me first give you all a brief information about our school, Sunbeam School, Mughalsarai. Ours is a CBSE affiliated school situated at Dulhipur, Mughalsarai, founded in the year of 2005, spread across a sprawling green campus of 8 acres with a history of creating aced scholars in every stream of studies, may it be science, commerce, or humanities. We at Sunbeam have been organizing such events related to health, career guidance, and education to help building a stronger, informative, and healthy community around us. In the same perspective, today we have with us Ms. Sarika Singh, Chief Trustee of Ashwa, War Against Cancer, a charitable trust helping people to fight against this deadly disease called cancer, and Dr. Asim Mishra from Mahamana Madan Mohan Malviya Cancer Research Center, Varanasi, to give us more information about today's topic, that is oral cancer. Over to you, Srishti. Thank you. Thank you, sir. Now here is Ms. Sarika to tell us more about the speaker of today, Dr. Asim Mishra. Good evening, everyone, and thank you so much for giving this opportunity to connect with the students. I'm really grateful to entire family of Sunbeam School, Mughalsarai. I'll not take too much time. I'll just introduce our chief speaker, Dr. Asim Mishra. Before that, students, I would like to share one small information with you. That did you know that every cancer has its own color and month? I'm just telling you, lavender or light purple is all cancer color, and April is considered as Oral Cancer Awareness Month. So here we have Dr. Asim Mishra, as Srishti has already introduced about his experience that he is working right now there are two Tata Cancer hospitals in Varanasi. One is located in Lahertara, another is at Sundarpur, Homi Bhabha and Mahamana. He is officer in charge of head and neck cancer surgery, and he is surgical oncologist. As far as we are very lucky that we are getting this opportunity to interact with him today. So I request all the audience to please participate equally, and you students, you will be the future to spread good word of mouth and to create awareness. And as far as Dr. Asim Mishra is concerned, he is having experience of more than 15 years, and he is associating with Tata Med 2018. After completing his MBBS and all degrees, he has completed his Masters in Surgeon MS from Grant Medical Institute, Mumbai. And he has also completed his MCH
degree, that is postdoctoral degree equivalent to PhD from Tata Memorial Hospital, Mumbai only. So we are very lucky to have him today here. Now, I'll not take too much time in this concern, and I'd like to invite Dr. Asim Misra. Before that, I'll just share a small personal information about Dr. Asim Misra. He is a qualified professional. He is having exceptional experience. His expertise, knowledge, and everything. Apart that, he is a very kind-hearted and a very nice human being who is always taking initiative for creating awareness, and he is also taking a challenge, or he is also very keen to organizing cancer awareness camps also. His main focus is, he's also talking to me like, Sarika ma'am, we should regularly organize checkup camps and awareness session to make the society aware. That his words are like this: ki cancer can be treated, cancer can be curable if it is treated in early stage. And he is associating with different social groups also, like municipal and many other camps also. So thank you once again, Dr. Asim Misra sir, for giving your valuable time from your busy schedule. And if I'm going to introduce you, it will take many more other time. So let's start our main focus session, and please deliver your speak and interact with students. And we are really thankful to you for today being here. Please welcome Asim sir. Please join us. Thank you, Sarika ji, and thank you, Swaraj ji, and thanks for the wonderful welcome, Srishti. First, I would definitely like to thank the organizers for inviting me for this awareness camp. I would say not say camp per se, because you are all not here with me eye to eye. At least I hope that by the end of my talk, I'm able to convince all the parents, all the students, that what is actually happening around us. So Srishti had defined what humongous thing tobacco is. So we must realize how we can put an end to this thing and why we should do that. Because it is happening that most of the people have actually not realized what potential harm it causes to everybody. Everybody feels it's okay to smoke, it's okay to chew tobacco. There are so many people using it. Some of them do not do it because of the fear of parents, because of fear of the teachers. But they must themselves realize why they should not do it. They must understand the mechanism behind it. And what are the problems we are facing? Because all the children, I just wanted to ask, what are the classes that are involved in this? Can anybody please tell me what classes are attending this? Swarajji? Dr. Sahab, there are children and their parents right from classes upper KG to class 12. Excellent. And sir, thoda sa agar ho sake, because parents are also there. Agar aap Hindi English mix karke bolenge, so it will be easier for the parents to understand. Sure, no problem. Thank you, sir. So thank you so much. Now, since all the classes are involved, the first thing that I want to tell is most vulnerable classes. So the most vulnerable classes are starting from class 6th onwards. So once the child is around 10 years old, from class 12th. So 7th to 12th is the most vulnerable period for a child. उस समय सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं जो इस तरीके की लतों का शिकार हो जाते हैं, और वो बहुत ही आराम से चलते फिरते ऐसे ही पिक कर लेते हैं इस हैबिट को. तो उससे कैसे बचना है और क्या होना चाहिए? बिकॉज व्हाट आई सी इज कि सब लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, सब लोग के पेरेंट्स उस पर उनका ध्यान रख रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बट उसके बाद भी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एजुकेटेड क्लास who get into these habits and it's very difficult to quit. That is why ये बहुत जरूरी है कि आप इस हैबिट के चक्कर में ही ना पड़े.
द प्रॉब्लम दैट वी हैव इज इंडिया में ओरल कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है और वर्ल्ड में इट इज द 6th लार्जेस्ट कैंसर। और दुख की बात यह है कि एवरी सेकंड पर्सन दैट आई एम सीइंग टुडे इन माय ओपीडी, मेरी ओपीडी में आते हैं पेशेंट दिखाने आते हैं, 50% आधे लोग 1 साल या 2 साल के बाद जिंदा नहीं बचते हैं। और दुख की बात यह नहीं कि कैंसर हो गया, दुख की बात यह है कि अवॉइडेबल कैंसर है, ये पूरी तरीके से इससे बचा जा सकता है। और जो बिहेवियर है हमारा, टोबैको, अल्कोहल, सुपारी, खैनी, जर्दा, पान मसाला, ये इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं जिसकी वजह से होता है। इसके बारे में सबको पता है कि इससे होता है, अब इससे समझना कैसे है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो डार्क ब्लू एरिया में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये वर्ल्ड कैंसर मैप है कि किस एरियाज में, किस कंट्रीज में कौन कौन से कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप येलो एरिया देख सकते हैं, जैसे रशिया है, यूरोप है, ग्रीनलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। उन सब जगहों पे सबसे ज्यादा कैंसर लंग कैंसर हैं और लंग कैंसर का कॉज होता है स्मोकिंग। फिर आप डार्क ग्रीन देख रहे हैं जो स्टमक कैंसर्स हैं, ये हमारे मिडिल ईस्ट में बहुत कॉमन है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि स्पाइसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन होता है, डिस्पाइट इन एरियाज में अल्कोहल सबसे ज्यादा बैंड है। और जो डार्क ब्लू एरिया है, जो हमारा इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में सबसे ज्यादा कैंसर जो कॉमन है वो है ओरल कैंसर। और इंडिया में इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। व्हेन वी कंबाइन मेल्स और फीमेल्स दोनों को मिला देते हैं तो ये सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है। और हम लोग इसकी आदत कैसे डालते हैं, ये होता है टोबैको से, और टोबैको की आदत कैसे पड़ती है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि हम लोग फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, आसपास देखते हैं लोगों को, तो हमको लगता है कूल लगेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा, हाथ में सिगरेट पकड़े हुए हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, छल्ले उड़ा रहे हैं। दैट इज वन वेरी कॉमन थिंग जो लोगों को लगता है कि ठीक है। दूसरी चीज है पीयर प्रेशर। नाउ एक ग्रुप है अगर 5 बच्चों का, उसमें से कोई एक बच्चा भी स्मोक करता है या टोबैको खाता है और वो अपने फ्रेंड्स को ऑफर करता है, तो इट बिकम्स फॉर अ फ्रेंड कि यार मैं अगर नहीं लूंगा तो मेरे को लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, मैं उस ग्रुप में नहीं रहूंगा। फियर ऑफ लूजिंग आउट, एंड इट इज अ वेरी 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 बिग फियर। किसी को भी ये लगना कि अगर मेरे को मिस आउट हो गया तो मैं कैसे रहूंगा, तो वो हमेशा सोसाइटी में रहना चाहता है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, और हर किसी को लगता है कि अगर मैं मिस आउट हो गया, इस वजह से वो पीयर प्रेशर काम करता है। तो फ्रेंड्स जब बोलते हैं कि ले लो, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व ना हो। दूसरी मोस्ट कॉमन चीज होती है एडवर्टाइजिंग। और आप बनारस शहर में कहीं पे भी निकल जाइए, आपको हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे पान थूका हुआ मिलेगा, हर 100-200 मीटर की दुकान पे पान सुपारी की दुकान मिलेगी। और हम उसको ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं कर पाते हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, टोबैको बैंड है, स्ट्रिक्टली बैंड है। और स्कूल इंस्टीट्यूशंस, उसके आसपास हम लोग 1 किलोमीटर में बेच नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी जगह जगह पे मिलती रहती है। और इतनी तगड़ी एडवर्टाइजिंग होती रहती है कि लोगों को लगता है कि दैट्स फाइन, इट्स ओके टू यूज टोबैको, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड। See, we may understand at a senior level, teachers may understand at a senior level, but students को लगता है कि इतना एडवर्टाइजिंग हो क्यों रहा है, why it is so much common। और एडवर्टाइजिंग इज नॉट डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे लोग क्लासमेट के पेंसिल्स यूज करते होंगे, मोस्ट ऑफ देम, और इस तरह की चीजें, जैसे फियामा द विल्स का शैम्पू है, फियामा द विल्स का सोप है। तो इन सब चीजों को जब आप सबकॉन्शियसली देखते हैं कि ये चीजें यूज हो रही हैं, तो आप लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि तो शैम्पू है, साबुन है, पेन्स है, पेंसिल्स हैं, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट मार्केटिंग के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि बडवाइजर की सोडा की बोतल आती है, बडवाइजर का मिनरल वाटर आता है। Now we know that company manufactures alcohol, that company manufactures cigarette. Similarly, Classmate is a product of ITC, Indian Tobacco Company. और वो कंपनी डायरेक्टली मार्केटिंग करती है, बच्चों को कॉन्शियस करती है इस चीज के लिए कि उनकी कंपनी है। नाउ एट
10 years of age और 7 years of age a person जिसको दिखाई पड़ रहा है कि क्लासमेट के पेंसिल्स में ITC लिखा है, that is cool, that is good. You become brand conscious. आपको दिखता है कि ब्रांड है फियामा द विल्स, आपको दिखता है। जब आप सिगरेट के पैकेट पे फियामा द विल्स देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्यों? विल्स कंपनी की है। बट फियामा द विल्स का मतलब क्या होता है? फ्लेम ऑफ विल्स। व्हाट इज द सेंस ऑफ अ कंपनी जो टोबैको बनाती है? फ्लेम ऑफ विल्स के नाम से पहले इनॉग्रेशन हुआ है, वो सिगरेट तंबाकू की जगह साबुन क्यों बना रही है? कोई सोचता नहीं है इस पे। वो इसलिए होता है कि वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में एक्ट करना शुरू कर देता है उस एज से। टोबैको कंपनी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो मार्केटिंग सारी स्किल्स को यूज करती है ताकि सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर सकें। और वो क्यों हो रहा है? जितने भी डेवलप्ड नेशन है, दे आर रिफ्यूजिंग, दे आर पुटिंग एन एंड टू द टोबैको। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज में उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है। एंड व्हाट वी डू, वी फॉल प्रे टू दोस थिंग्स। और यूज क्यों करते हैं? रिलैक्सेशन होता है, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम, अगर किसी के पेरेंट्स घर में यूज करते हैं, या भाई है, बहन है, बड़ा भाई है, कोई भी इस्तेमाल करता है और बच्चा उसको देखता है, तो एक सोशल एक्सेप्टेंस हो जाती है कि ठीक है अगर पापा भी करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारे दोस्त कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, इट्स ओके। और व्हेन वी सी आवर रोल मॉडल्स, व्हेन वी सी आवर पेरेंट्स, इट बिकम्स सो कॉमन, सो इजी फॉर अस। ठीक है पापा करते हैं तो हम भी कर लेंगे, मम्मी यूज कर रही है तो हम भी कर लेंगे। जैसे कि आप ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को देखते हैं, यूज कर लेते हैं, उसी तरीके से यही होता है। एंड दैट इज हाउ, दैट आर द मेन रीजंस हाउ वी गेट एडिक्टेड टू टोबैको। और सभी पेरेंट्स को यह समझने की जरूरत है कि क्यों इससे बचना चाहिए और कैसे अपने बच्चों को कंपनी से, किस कंपनी में है उनका ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को समझना चाहिए कि नुकसान कैसे कर सकती है। और जब वो अपने आप ही इस चीज को नहीं करेंगे, अगर ग्रुप में 10 लोग हैं और एक यूज करता है और सब यूज करने लगते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक होता है। लेकिन अगर 10 लोग में से 2 लोग यूज करते हैं और 8 लोग यूज नहीं करते हैं, तो पावर वो होती है कि वो 8 लोग उसको मिलकर उन 2 लोगों को भी छुड़वा दें, एंड नॉट द अदर वे अराउंड। और सबसे अच्छी बात है कि एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट दिस स्कूल इज होस्टिंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि विद द टाइप ऑफ एजुकेशन जो आप लोगों को मिल रही है, जो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं डिफरेंट कल्चरल सोशल प्रॉब्लम्स के साथ, आप समझ जाते हैं जैसे जैसे एजुकेशन लेवल्स, द मोर पीपल पास आउट फ्रॉम हाई स्कूल, उनकी चांस ऑफ यूजिंग टोबैको, चाहे वो स्मोक फॉर्म में हो, चाहे गुटखा, खैनी, जर्दा किसी फॉर्म में हो, वो कम हो जाता है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग। सिगरेट, सिगार, स्मोकलेस टोबैको, जिन लोगों ने 10th से तक की पढ़ाई करी है उनमें इट इज इन रेड, और जिन्होंने नहीं करी है, सिर्फ ड्रॉप आउट्स है स्कूल के, उनमें इट इज इन ब्लू। एंड दिस इज इन 30 millions and 10 millions, दैट इज अ डिफरेंस। 1:3 का डिफरेंस हो जाता है। दैट इज व्हाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिपीटेड हैमरिंग बाय टीचर्स दैट व्हाई इट इज रॉन्ग, व्हाई, एंड दैट इज व्हाई मैं चाहता हूं कि हमारे इस टॉपिक से बहुत सारे टीचर्स जो भी हैं इसमें इस चीज को समझें, और पेरेंट्स भी इसको समझें कि वो रिपीटेड हैमरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इस बात से कि टोबैको से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। एवरीबडी सीज ऑन द टोबैको स्मोक, उसके उस पे लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, और गुटखा च्यूइंग कॉजेस कैंसर। इट्स वेरी वेरी नाइसली रिटन ऑन दैट। अदर देन कैंसर, उसकी वजह से लकवा, जो स्ट्रोक बोलते हैं, जिसको सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं, जिसमें दिमाग में खून के थक्के जम जाते हैं और पैरालिसिस हो जाती है, या हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज होती हैं, वो हार्ट की एरिथमियाज जिसमें बोलते हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअसली बीटा ब्लॉकर्स वगैरह जो दवाइयां आप लोग आजकल कॉमनली यूज होने लगी हैं, वो होते हैं। या अस्थमा की शिकायत होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। हम लोग बहुत हो हल्ला मचाते हैं और इस तरह का बहुत शोर होता है कि दिवाली आने वाली है, क्रिसमस आने वाला है, इसमें पटाखे छुड़ाने पड़ेंगे, इसमें ये होगा, इस तरीके से करना है, उसमें प्रदूषण होता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ जाएंगी। बट हमको ये समझना चाहिए कि हमारे देश में 16% लोग हैं, 16% समझ लीजिए, हर 20 में से 3 लोग जो स्मोक करते हैं, और 32% इज द पॉपुलेशन विच इज यूजिंग टोबैको किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा खाती हो, चाहे तंबाकू खाती हो, चाहे खैनी खाती हो, या बीड़ी पीती हो, या सिगरेट पीती हो। 32 यानी कि हर तीसरा व्यक्ति है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। और हम लोग किस चीज से परेशान हैं? प्रदूषण से।
हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हम कॉमनली सीधा सीधा प्रदूषण अपने मुंह के अंदर ले रहे हैं, अपनी छातियों को दे रहे हैं। इंपोर्टेंस इनफर्टिलिटी, आजकल बहुत सारी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल गई हैं और वो बहुत ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग इस तरह की चीजों पे नजरअंदाज करते जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं नहीं तेल घी नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है जिनको यूज ही नहीं करना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने इग्नोरेंस डाल दिया है अपने आगे, आंखों के आगे पट्टी डाल दी। और दूसरी सबसे ज्यादा कॉमन है, हर दूसरे दिन अखबार में हमको पढ़ने को मिलता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन बहुत कॉमन होता जा रहा है हमारे क्लास बच्चों में, एंजाइटी बहुत कॉमन होती जा रही है। जो एनवायरनमेंट में कोई टोबैको स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन करता है, अगर घर में भी कोई करता है एंड ही इज एक्सपोज्ड टू दैट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, वो बच्चा अपने आप एंजाइटी से हमको कैसे फाइट करना नहीं सीख पाता है, वो मिस करेगा उस चीज को। एंड दैट इज व्हाई वी हैव सो मेनी पीपल हु आर गेटिंग डिप्रेस्ड। स्कूल में एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेस हो गए, कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेस हो गए, एग्जाम में नंबर कम आ गए तो डिप्रेस हो गए। ये जो कोपिंग मैकेनिज्म होती है ये भी हम लोग सोसाइटी से पिक करते हैं कि हमारे सोसाइटी में आसपास के लोग कैसे इस डिप्रेशन से या कैसे हार्डशिप्स को, आई वुड नॉट से डिप्रेशन, कैसे हार्डशिप्स को फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा रहने वाली है, कभी खत्म नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट हम उनको कैसे फेस करते हैं ये लड़ना हम लोग देखते हैं लोगों से, अपने घर में बाहर, पेरेंट्स टीचर सबको देखते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई हैव बीन अमंग टीचर्स who have taught me कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ना है। एंड आई मस्ट से कि जितने भी ऐसे टीचर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन को उन टीचर्स को और प्रमोट करना चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी को लाते हैं। हर टीचर पॉजिटिव एनर्जी लाता है, आई एम नॉट सेइंग, डोंट मिसजज मी, बट जो इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं वो हमेशा चिल्ड्रंस के बीच में हमेशा फेमस रहते हैं और हर कोई उनको पसंद करता है। और ये जब टोबैको इतना सब कुछ यूज हो रहा है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है हमको समझना चाहिए कि क्यों, क्योंकि all of you are students, all of you have to understand what are the problems and how you are going to fight it. तो जिन घरों में स्मोकिंग होती है, टोबैको यूज होती है, उन घरों में those kids are likely to have an insecurity for food, not because they are poor, not because they do not have money. It is because of the psychological issues that they will have 2 times likelihood of developing hunger. And those families as compared to those who do not smoke, उनको 5 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि उनके घर में कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा या उससे कोई डिसेबिलिटी होगी जिससे एम्प्लॉयमेंट लॉस हो सकता है। एंड ये चीज आज के बच्चों में, खासकर 10th 11th 12th के बच्चों को ये बात समझना जरूरी है कि यू स्टडी हार्ड, यू वर्क हार्ड, यू डेवलप योर करियर, बट यू पिक अप वन सच हैबिट एंड इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ एंड forever. And 1% of the direct GDP तो हर कोई सुनता रहता होगा और जो भी इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे अच्छे से समझते भी होंगे, 1% of the India's GDP is just lost for managing cancer. For every 100 rupees that is spent or gained by the government, जो हम लोग स्पेंड करके खरीदते हैं, जो रेवेन्यू आता है उसमें से गवर्नमेंट loses 816 rupees. Since the government is not losing directly, nobody is getting affected. I'll tell you how. हम 100 रुपए की सिगरेट हमने 1000 रुपए की सिगरेट खरीदी और 100 रुपए का कंपनी को फायदा हुआ, लेकिन वो जो देश को 100 रुपए की अर्निंग हुई फ्रॉम रेवेन्यू, उसमें से जो टोबैको होती है उसमें से हमने 100 रुपए कमाए हैं, लेकिन द पॉपुलेशन इज स्पेंडिंग 2000 rupees फॉर एवरी 100 rupees फॉर गेटिंग द ट्रीटमेंट डन, फॉर बाइंग द मेडिसिन, फॉर बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ occupation. And that is why it is a very, very disastrous habit. In fact, 5.3% of all the private and public spending, and that amounts to, and everybody is hearing that we are going to be a 1 trillion economy soon. So imagine 1 trillion ka 5.3% is going to be lost because of diseases caused due to tobacco. And that is why it is such a disastrous habit. हमारी लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, एज कम होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि बीमार पड़ते हैं, लगातार बार बार बीमार पड़ते हैं या उन दवाइयों के उस पर रहते हैं, हमारी लाइफ कम होती है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो जाती है। टोबैको इंडस्ट्रीज ने क्या किया इसके लिए,
गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए? सो दैट एवरी टाइम दे से दिस कि अगर टोबैको का कल्टीवेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी इंडिया की खराब हो जाएगी. And that is a favorite tobacco industry's dialogue. Whenever they come in a meeting, whenever they come in a legislation or cabinet meetings, they tell this to ministers and journalists and everybody spread this lie. अगर हमने specific tobacco control measures लगाए हैं तो हमें economic hardships को face करना पड़ेगा because we are earning 600 crore rupees from tobacco, but they are forgetting that we are losing $1,773 billion, which I had mentioned in this slide. 1,773 billion rupees are lost in comparison to just 6 billion rupees that we earn. Now, those who use tobacco, उनको करना क्या है? ओरल कैंसर अवेयरनेस है तो आपको समझना चाहिए कि हमको देखना कैसे, अपने मुंह को देखना कैसे. आई एम गोइंग टू कम एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू अपीयर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जो मुंह के अंदर का एरिया होता है उसमें कोई सफेद पचकत्ता पड़ना शुरू होता है, इस तरीके का आप देख सकते हैं. एनीथिंग लाइक दिस, इस तरीके के सफेद दाग जबान पे, गाल पे, आगे होठों के पास, ऐसे खुदरा सा कोई मुंह के अंदर फीलिंग आ रही है, इस तरह का कोई भी लीजन अगर आपको दिखाई पड़ता है तो ये कैंसर या प्री कैंसर हो सकता है. या मुंह में सुपारी बहुत कॉमन होती है हम लोग कहते हैं सुपारी से कोई नुकसान नहीं होता. सुपारी से ये जो पूरा दिख रहा है व्हाइटनेस जो दिख रही है वैसी हो जाती है. दिस इज कॉल्ड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. एंड ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन सब पिक्चर्स को आप अपने दिमाग में और मन में बैठा लीजिए. और बच्चे ही सही, 7th 8th 9th 10th के बच्चे जो हैं ये लोग देख सकते हैं, टॉर्च डाल के मुंह के अंदर देख सकते हैं, और जो भी टोबैको यूज कर रहा है उनको बता सकते हो कि देखो आपको चेकअप कराने की जरूरत है और उनको तंबाकू को रोकने की क्यों जरूरत है. क्यों? क्योंकि ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. मेरी काफी फेवरेट स्लाइड है एंड जिन लोगों ने पहले सुना होगा मुझको, उन्होंने इसको देखा होगा शायद. ये सबसे ऊपर जो है हम लोग का एक नेशनल एनिमल है टाइगर, दूसरा है नेशनल बर्ड, एंड देन वी हैव द नेशनल फ्लावर. बट हमारे देश में जो हम लोग टोबैको कंजम्पशन करते हैं और जो ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, हमने एक और चीज बनाई है एंड दिस इज आवर नेशनल माउथ. इस मुंह के अंदर सारे जर्म्स, सारे बैक्टीरिया जो हम सोच सकते हैं वो मिल सकते हैं. दांतों में कोई ना कोई बैक्टीरिया ऐसे मिल सकते हैं जिनसे कोई हर बीमारी होती है, मुंह में, पेट में, गले में या किसी शरीर के और अंग में. हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम सिर्फ कुछ चीजें जो स्पेसिफिकली करते हैं तो हम इन कैंसर से बच सकते हैं. अगर हम लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि हर स्टूडेंट को स्कूल में जो जाते हैं दे आर इन्वॉल्व इन सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे योगा करते हो, चाहे एक्सरसाइज करते हो, चाहे कुछ एरोबिक्स करते हो, चाहे स्पोर्ट्स खेलते हैं, एंड दैट हेल्प्स यू 40% reduction in the chances of developing cancer in future. Those who are involved in active sports, have a healthy diet, do not use tobacco or do not smoke. Avoid getting obese. Obese people are 3 times higher likelihood of developing breast cancers and abdominal cancers. एंड जब सर्वे किया था हमने इन चीजों का, तो हमने पाया था कि जब 25,000 लोगों का सर्वे किया था तो जस्ट 10% ऑफ पीपल लाइक दिस फॉलो दिस रूटीन, दैट दे आर नॉट यूज, दे आर हैविंग अ हेल्दी डाइट, स्मोक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं. यही चीजें हैं जो हमको कॉमनली यूज करनी है एंड बीमारियों से बचना है. टोबैको सेसेशन, कैसा भी टोबैको हो उसको नहीं यूज करना है. अगर अल्कोहल यूज करते हैं, I'll come to the alcohol also, how it causes oral cancer. You maintain a healthy lifestyle. और सब लोग अगर ये चीज ही ध्यान रखते हैं, बस this is more than sufficient for me and I will be very happy if none of you gets involved in using tobacco in future. Maintain a healthy lifestyle, reduce weight, develop a good genital hygiene, and always participate in screening programs. और स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी स्क्रीनिंग हो. एज स्टूडेंट्स, एज टीचर्स, यू पीपल, आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि देखो इससे क्यों बचना है.
कितने सोसाइटल इम्पैक्ट्स हैं, फाइनेंशियल कितना लॉस हो रहा है हमारे देश को। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है। इमेजिन अगर हमारे टोबैको से जो लॉस हो रहा है 5.3% ऑफ द जीडीपी, हम लोग हेल्थ पे सिर्फ 2% जीडीपी खर्च करते हैं और 5.3% जीडीपी लॉस हो रहा है हमको, इस बिजनेस में लॉस हो रहा है पूरे इंडिया को। इमेजिन एवरीबडी क्विट्स, our GDP is going to be 5.3% positive every time, business के अलावा। You have to realize कि why you are supposed to quit. Do not sit with smokers or tobacco chewers. कोई अगर यूज करता है आपके साथ में, कोई भी बच्चा दिखता है, definitely I know कि teachers are going to be very very vigilant in this. They and always do that. क्योंकि हमने भी स्कूल में देखा है कि they are very very particular, कोई इस तरीके से बच्चा नहीं आता है, आप लोग भी हैं। बट स्टूडेंट्स ऑल्सो कि घर के बाहर भी अगर आप किसी को देखते हैं तो आपको रोकना है। आपके घर में अगर आपके माँ बाप में कोई इसको सेवन कर पाता है, करता है, उसको रोकना है, मना करना है। रीजंस बहुत सारे देते हैं लोग, बहुत सारे रीजंस देते हैं कि हम ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे लगातार स्मोक आती रहती है, तो स्मोक तो वैसे एक्सपोजर होता है तो हम यूज कर लेते हैं, मुंह बंद करके रखने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे बहाने मिलेंगे। बट आपको हमेशा यही बताना है कि सेवन नहीं करना है, इसको रोकना है। और हर कोई अगर ये बात बोलेगा, everybody will always be able to make at least 1% quit every year, and that is going to be a huge number. और जिन लोगों को जरूरत है कि नहीं कर पा रहे हैं, वो टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स का हेल्प ले सकते हैं। We have a national quit line number जो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के स्कूल के साथ में। कोई भी अगर उसको हेल्प चाहते हैं, they can just give a missed call on that. उसके बाद आपको अपने आप कॉल आएगा कि कैसे आपको छोड़ना है, उसके लिए मदद की जाएगी और आप छोड़ सकते हैं। और दूसरी चीजें बहुत कॉमनली आजकल एडवर्टाइज हो रही है, निकोटीन च्युइंग गम्स, ई सिगरेट्स। हम लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, इसे ये तो सेफ साइड है, इनको छुड़ाने के लिए यूज करते हैं, बट एक्चुअली दिस इज अ सेकंड प्रोपेगेंडा दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय टोबैको कंपनीज। निकोटीन के च्युइंग गम्स, ई सिगरेट्स, दे आर इक्वली हार्मफुल। उसमें भी वही कंटेंट होते हैं जो कैंसर करते हैं और बीमारियां करते हैं, तो इट इज नॉट अ सेफ ऑल्टरनेटिव। अगर उसको छोड़ने के लिए कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड यू आर डेवलपिंग सिम्टम्स जिसकी वजह से आप टोबैको स्मोकिंग या टोबैको छोड़ नहीं पा रहे, तो आप थोड़े दिन के लिए 10, 5, 7 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्मफुल। अल्कोहल, हमको समझना चाहिए कि अल्कोहल इज वेरी वेरी कार्सिनोजेनिक। अल्कोहल हमारी बॉडी में जब हम इंटेक करते हैं तो लिवर में जाके एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आप सब लोगों को पता होगा जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आप लोग उसको हाथ से छूते भी नहीं, बट ये चीज हमने अपने इंजेस्ट करके बॉडी बना रही है, तो हाउ मच हार्म इट इज गोइंग टू कॉज टू द लिवर। इमेजिन जहां पे बनता है उस जगह की जो वेसल्स होती हैं जहां से बन के ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो खराब हो जाती हैं। इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग प्रोसेस। और इसकी वजह से साथ में अगर टोबैको भी ले रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं तो जो कैंसर होने का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बढ़ जाता है। 8 टाइम्स इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ कैंसर। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारी क्लासेस हो रही हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। इवन टीचर्स, दे आर एडल्ट्स, दे अंडरस्टैंड एंड दे हैव टू फाइंड टाइम। अगर कोई टीचर ये बात बता रहा है कि हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, दे हैव टू फॉलो इट देमसेल्व्स। दे हैव टू मेंटेन देयर हेल्दी वेट, दे हैव टू मेंटेन देयर हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड देन यू विल सी दैट एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू फॉलो यू। और उसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, यूट्रस के कैंसर, इसोफेगस कैंसर सब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमने एक हेल्दी वेट मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज वो तभी होगा जब हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, स्ट्रेस से बच रहे हैं, ओबीस होने से बच रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। all these things are going to reduce the problems. Just for sharing, all the colorful fruits, red, blue, yellow, green, all these fruits are very healthy. और ये पिरामिड है, जो बेस ऑफ द पिरामिड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमको अपनी डाइट में सबसे ज्यादा वीगन डाइट जो बोलते हैं, जिस पार्ट है, जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उसको इन्वॉल्व करना है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। आई एम सॉरी, वी हैव vegan with us, but yes, being a non-vegetarian is not going to increase your incidence of cancers. There are other disorders also, but yes, being vegan is very good, but always maintain a good and healthy diet.
जो चीजें गुड फॉर यू वही चीजें हैं गुड फॉर द प्लैनेट, एंड उसी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या चीजों का सेवन ज्यादा करना है और क्या चीजों का सेवन कम करना है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का रिकमेंडेड कंजम्पशन, नट्स का इनका कंजम्पशन ज्यादा रखना है बिकॉज यू आर हेल्दी फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। Even if you involve yourself in just 30 minutes of moderate to vigorous physical exercises, अगर 4 या 5 दिन भी आप करते हैं, that is more than sufficient to reduce a lot of illnesses in you. And for children, it is a slightly more. Children have to be very active. All the children. आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंपटीशन में, आप सब कुछ करिए, बट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटी एंड विगरस फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, एंड दैट इज गोइंग टू पे your entire life. Everybody. For children and for mothers, it is very important for breastfeeding. जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती जा रही है, हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड भी कम हो रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉजिंग इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स. ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी यूजफुल फॉर मदर्स एज वेल एज फॉर बेबीज. And it reduces the incidence of breast cancers, ovarian cancers. And I would just say, please do not use tobacco. Tobacco has several side effects. It causes several diseases. चाहे वो कैंसर हो, कैंसर तो है ही, कैंसर जानलेवा है, इसके लिए लोग इसे डरते हैं, लेकिन शायद लोग हाइपरटेंशन से, डायबिटीज से नहीं डरते. बट ये दो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं हमारे देश में. हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में 20 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है. 20 करोड़, हम लोग 140 करोड़ हैं, 20 करोड़ लोग किसी ना किसी फॉर्म में ब्लड प्रेशर की बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है. और हर तीसरा व्यक्ति टोबैको यूज करता है, और टोबैको इसका डायरेक्ट कॉज है. अगर आप टोबैको छोड़ेंगे तो आपका हो सकता है हाइपरटेंशन अपने आप कम हो जाए. हम लोग टोबैको की आदत इसलिए डाल लेते हैं कि हमको स्ट्रेस हो रहा है, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हो रहा है, या फिर हम कूल लग रहे हैं. उसमें आपको नहीं पढ़ना है, आपको समझना है कि दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर योर सोसाइटी. इमेजिन जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस 10 लोगों की बात आप कर रहे हैं, उस ग्रुप में अगर एक बंदा स्मोक करता है और सब स्मोक करने लगे, तो स्मोकर्स के बीच में कैंसर होने का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 30% है, यानी कि 3 लोग मर जाएंगे. आर यू ओके विद दैट कि 3 of your friends are going to die? Is it all right? No, it is not all right. And that is what we have to realize. Involve yourself in screening camps, make people aware, talk to others. And I would request that all the teachers please be very, very vigilant so that none of your students ever catches this habit. Whether you are in schools, those who are in class 10th, 11th and 12th, I would request, once you enter your college life, please do not get into the peer pressure कि नहीं स्कूल में तो सब restrictions थे, तो सारे restrictions हट चुके हैं, तो हम कुछ भी करेंगे, अपने मन की करेंगे. उस समय बहुत जरूरी होता है that you be very, very disciplined. That are the formative years in your colleges. And कोई भी habit जो उस समय आप लेते हैं और आपको लाइफ लॉन्ग नुकसान करने वाली, उसको प्लीज अवॉइड करना. Thank you so much. I would request anybody who would like to ask any questions, please go ahead. Thank you, sir. It was really super exciting and commendable talk. And as I have noticed, the most considerable key statement for me during the entire session was that potential of tobacco or consuming 1 or 2 cigarettes is not dangerous. As you said, people think that consuming 1 or 2 cigarettes is not dangerous. So what I noticed exactly that ये नहीं है कि आप 1000 सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें से कौन से नंबर का सिगरेट आपको कैंसर कॉज कराने वाला है. That is not sure. So consuming 1 or 2 cigarettes may cause cancer. It is a non-pretendable thing. So So, I'll just add on really- to this thing. So what Yes. happens is when we use poison, now this is harmful for us. हो सकता है कि एक सिगरेट पी रहे हैं, आपने एक बार सिगरेट पी, तो होता क्या है कि जब हम पहली बार सिगरेट पीते हैं तो हम देखते हैं कुछ नहीं हुआ हमको, इट्स ओके, एंड दैट लीड्स टू अनदर, एंड दैट लीड्स टू अनदर.
एंड हो सकता है कि आप आज पी रहे हैं, उसके बाद आपने 2 हफ्ते बाद पी, फिर आपने 1 महीने बाद पी, फिर इस तरीके से आपने कंटिन्यूस, बट वंस इट बिकम्स अ हैबिट, एंड इट बिकम्स अ हैबिट सूनर और लेटर, एंड वी अनकॉन्शियसली गेट ट्रैप्ड इनटू इट। आज हम बहुत स्ट्रेस्ड है, किसी ने सिगरेट पकड़ा दिया ना, आपने कहा कि हाँ ले लेते, क्या फर्क पड़ता है, एंड यू फेल्ट गुड। उसके बाद वो जो चेंज शुरू होता है, when which you cannot avoid. I am not scaring you people कि it is like cocaine, कि आपने cocaine लिया तो you are immediately going to get a rush for it and you are going to take it and want it again. But yes, अगर आपको habit हो जाएगी, then you will not be able to quit easily. Quitting tobacco is very, very difficult thing. It is the most addictive substance in this planet. And tobacco जो है वो insecticide की तरह use होती थी till 2016 in India. 2014 अगस्त में tobacco has been banned as an insecticide. नहीं तो फार्मर्स उसको प्रोड्यूस कर रहे थे इंसेक्टिसाइड बनाने के नाम पे. So it is so harmful. उसमें सब कुछ है, सारे केमिकल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं, तो उनको नहीं यूज करना है. एंड आकांक्षी जी ने जैसा बोला, इट इज वेरी वेरी राइट दैट 1 cigarette is also harmful, 10 cigarettes are also harmful. 10 cigarettes may kill you immediately or may cause harm immediately. 1 cigarette may cause harm after 10 months. All right, so here we have one question from Pranita Agrawal. The question is that the people, those who are not even prone to, that tobacco, they may be sometimes facing oral cancer. So what is the cause behind that? So first of all, we must realize that what is cancer? Cancer is any cell जिसने हमारे बॉडी में एक प्रॉपर्टी बना ली है डिवाइड करने के लिए, और उसको डिवीजन को रोकने वाला कोई नहीं है. Now it is going to divide uncontrolled. तो वो अपने मुंह में जहाँ पे नॉर्मल म्यूकोजा, नॉर्मल स्किन एरियाज बनते हैं, वहां पे वो एक ग्रोथ बनना शुरू हो जाएगा. इतनी तेजी से बढ़ रहा है. नॉर्मली अगर सेल 20 दिन में बढ़ते हैं तो वो 2 दिन में बढ़ रहा है, और वो कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वो अपनी ब्लड सप्लाई सब कुछ डिराइव करेगा. तो एक तो ये चीज, आई एम सॉरी, I'll just take some more time because ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है कैंसर और कैसे हो रहा है. जो लोग यूज कर रहे हैं उनको ही हो रहा है. पहली बात, 98% of the cancers that are caused, 98% of the oral cancers and 99.5% of oral cancers in Uttar Pradesh. बाकी डेटा के लिए हम भूल जाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि वो नहीं यूज करते उनको हो जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ. 99.5% of the people in Uttar Pradesh develop oral cancer and they are using tobacco in some form or other. हमारे पास पूरा डिटेल्स, इसीलिए हम लोग को रोकना है. क्यों? क्योंकि अगर टोबैको का यूज ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल अवॉइड दिस डेवलपिंग दिस डिजीज. ओनली 0.5% ऑफ द कैंसर जो होते हैं मुंह के, वो जेनेटिक कॉजेस की वजह से या किसी और कॉजेस की वजह से हो सकते हैं. डेफिनेटली अगर किसी के मुंह में इस तरह का छाला हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जो नहीं तंबाकू खाता है, जिसके दांत लड़ रहे हैं, कोई घाव हो रहा है जिसको बढ़ता चला जा रहा है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. बट दैट डज नॉट मीन कि जो लोग टोबैको खाते हैं उनको कैंसर नहीं हो रहा है. कैंसर उनको सबसे ज्यादा हो रहा है. आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर फॉर द पर्सन हु हैज आस्क्ड. Yes, sir. Actually, you well explained the answer. As I can see, there are a huge number of questions in the chat box, which reflect how exciting the session, the entire session was. So can we have a few more questions? Yes, please. The question is, how can our youngsters avoid, peer pressure to ignore tobacco? Because we know that they used to go for higher studies, they live in hostels, and to being a cool dude, they used to get that habit, to adapt towards this habit. So how can they avoid? So first thing, they have to change the definition of being cool. That is very important. And that starts from the formative years, from the school itself. Parents and teachers, they have to define that somebody who is cool, maybe a film star, maybe a sports person, he is not cool or looking cool because of tobacco or pan masala. He is cool because of the work he has done.
or the talent or the art or the creativity that he has shown to the world, or the contribution he has made to the society. Somebody becomes cool just because he smokes cigarette, then he's just lying to himself. That's all. So you have to understand that being cool is not using tobacco or smoking. That is a very, very clear thing that you have to understand. Now, how to avoid peer pressure? So first thing is, when your internal system is set that you know this definition, then this is not cool, because this habit is going to create a lot of problems for you, for your family. Somebody जिसको कैंसर, जिसकी फैमिली में कैंसर होता है, उनको आप देख लीजिए एक बार, अगर मन कर रहा है आपको क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपको लगता है कि झूठ है तो आप देख लीजिए आके कि कैसे लोग सफर करते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर कम से कम 5000 लोगों का ऑपरेशन किया है, उनमें से 2000 लोग मर चुके हैं। They have spent huge amount of money for the treatment, और उसमें से आधे लोग मर चुके हैं। Now, do you want to stay cool or do you want to be alive? That is very important to understand. So do not form from any pressure. Talk to your friends. Are you going, if you commit a murder, somebody will commit murder with you, are they okay with that? बात करने के लिए it looks very nice, but do you do that? Somebody is hitting somebody, everybody starts hitting. How many times does it happen in schools? It doesn't. तो हम जो हैबिट हमारे मन में अच्छा लग रहा है वो हम हैबिट एक्वायर कर लेंगे, और जो नहीं करना है उसको हम नहीं एक्वायर करेंगे। ये नहीं करना है। You have to make your definition of being cool very clear. Avoid a group. I would not say avoid a group. If you have friends in a group who have so much influence on you that you're going to start smoking, avoid that group. Tell them that I am not going to use or be in a group where you are going to smoke. And if people are okay with that, then you are indirectly having that habit. And if you catch that habit, you are to be blamed. That is why you have to understand that you are not supposed to fall prey, because the industry, the friends and everybody, they are trying to pull you into a habit. Somebody who is using it will not say कि अरे हमको नुकसान नहीं हुआ है, because तुमने आज पीना शुरू किया है, तुमको 5 साल या 10 साल या 15 साल के बाद कैंसर होगा तो तुम क्या करोगे? कोई नहीं रहेगा। हो सकता है 5 साल बाद तो मैं नहीं रहूंगा, शायद मैं दूसरे कॉलेज में चला जाऊंगा, स्कूल चला जाऊंगा, दूसरे सिटी में चला जाऊंगा। एंड वही हमको समझना है। We have to change the definition. Yeah, totally right, sir. Another question is from Natik Tiwari, and I guess the student has taken your session so seriously. He's asking that, sir, what are the causes behind happening that white lashes in the mouth? He wants to ask the chemical behind the behind creating the white lashes. So tobacco, I'll just say in one word, tobacco is very common. Tobacco is also a chemical, and that causes the leukoplakia that you saw, the erythroplakias or verrucous leukoplakias, and several other potentially malignant disorders. So white patches that we see, these are all being caused due to tobacco consumption. Tobacco consumption in form of cigarette, bidi, gutka, kheni, zarda, pan and supari. These are the causative agents जो ये व्हाइट पैचेस करते हैं। होता क्या है कि जब हम टोबैको या तंबाकू को रखते हैं, मुंह में लगातार रखते हैं, तो उसका इफेक्ट होता है ब्रेन पे, दैट इज डिफरेंट। उसके साथ में धीमे धीमे करके वहां पे लगातार कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता रहता है। ट्रॉमा नहीं भी होता है तो जो उसके कार्सिनोजेंस होते हैं वो निकलते हैं, और वो बकल म्यूकोजा का जो म्यूकोजा होता है उसको इफेक्ट करते हैं, और उसमें कैंसरस चेंजेस जिसको म्यूटेशन बोलते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। Now mutation is a long chain of different events, different mutations happen. Loss of 9p chromosome, loss of 3p chromosome, ठीक है, long arm of the 3q chromosome, इन सब में लगातार changes होते हैं। And ये होते हैं नाइट्रोसामाइंस की वजह से। तो केमिकल जानना चाहता था तो मैं बताता हूँ। टोबैको में नाइट्रोसामाइंस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, NNN, नाइट्रोसामाइंस। Now these nitrosamines are mutagenic agents. These create mutations in the buccal mucosa, and this further leads to these changes. So this leukoplakia is the first, you can say first or second stage. सबसे पहले जो भी टोबैको रखता है कहीं पे, तो उसमें टोबैको पाउच केराटोसिस बोलते हैं। तो सफेदी थोड़ी थोड़ी आना शुरू होती है जहाँ पे रखते हैं लगातार।
अगर पूरे बकल म्यूकोसा में भी कुछ लोगों को पूरा एक्सपोजर हो जाता है तो उनको भी होता है। उसके बाद लगातार वहां पे एक्सपोजर होने के बाद थोड़े समय के बाद वो व्हाइट पैचेस शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, जो टोबैको के नाइट्रोसामिन्स होते हैं, टोबैको में 76 अदर केमिकल्स आर आल्सो देयर, एंड वंस यू स्मोक टोबैको दैट क्रिएट्स 180 हार्मफुल केमिकल्स, वो और बर्न करके और म्यूटेशन, उनमें भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से पोटेंशियल हार्मफुल एजेंट्स और बढ़ जाते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक, और उसकी वजह से ये कैंसर होता है। एक Thank you, क्वेश्चन sir. और मैं लेना चाहूंगा, आई थिंक जस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। आई थिंक somebody has asked about drinking. Sir, when we drink alcohol, we get drunk. So drinking alcohol and beer are causing cancer or the effect? So now there are two things. Alcohol causes cancer. Alcohol causes intoxication. Now the intoxication जो होता है वो हम जब alcohol consume करते हैं तो जो brain में effect करता है dopaminergic fibers को और pathways को, और हमारे ईरस पाथवे को, जो हमारे इफेक्टिव, जो हमको कॉन्शियस रखते हैं, और सेरिबेलम के पार्ट को जो डिस्टॉर्ट करते हैं, उसकी वजह से अल्कोहल से जो इंटॉक्सिकेशन होता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। लेकिन जो अल्कोहल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद एसिटाल्डिहाइड में जो कन्वर्ट होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स को कन्वर्ट करता है, और जो टोबैको कार्सिनोजेंस या फिर अल्कोहल जो माउथ में एरियाज में क्रेविसेस में रह जाता है, वो वाला पार्ट जो कॉज करता है, वो कैंसर कॉज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो यस, अल्कोहल कॉजेस बोथ, इट कॉजेस दैट इफेक्ट एंड अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट आल्सो व्हिच मे बी कैंसर। उसके अलावा अल्कोहल की वजह से जो क्या होता है, जब भी हम कोई अल्कोहल या टोबैको या कोई चीज कंज्यूम करते हैं, तो होता क्या है, एकदम से मुंह में रखते हैं और लेते हैं, देन यू सडनली फील अ रश इन योर बॉडी एंड यू फील अलार्म्ड और अलर्ट। उसकी वजह से क्या होता है, दिस इज बिकॉज जो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन हैज सडनली इंक्रीज्ड। There are dopaminergic centers in the brain जो alert चले जाते हैं, and simultaneously it constricts the vessels in the body. इसकी वजह से blood pressure भी increase हो जाता है। तो जो लोग टोबैको स्मोकिंग छोड़ते हैं, उसके 3 घंटे बाद अगर स्मोकिंग उन्हें छोड़ते, 3 घंटे के बाद से उनका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना, नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। मैडम, प्लीज स्टार्ट द क्वेश्चंस। Yes, sir. Thank you, sir. The another question is from Shrishti's side. She is asking that what are the chances of reoccurrence of cancer after surgery? We have seen many cases like that. So I don't want to treat cancer, and that is why I am here. You can say I am lazy, I don't want to work, but the real reason is that cancer is very painful for me also, because I don't want to treat it. And the reason is it is very painful to undergo such a traumatic experience for you or anybody. Not only physically, it is very painful for the patient physically, and it's very common, and half of them are going to die. Now imagine I'm talking to somebody and I know that he is going to die or he may die sometime, and it is painful because there is 60% chances that this cancer may recur in stage 3 or stage 4. When we see cancers in end stages, like stage 3 and stage 4, there's 60% chances that despite all the treatment, this cancer can come back. It may not come back in the site that was treated before. It may come in the lungs, it may come in the liver, it may come in some other part of the body. So yes, there is very high likelihood of developing a recurrence of cancer, and that is why cancer is harmful, and that is why I do not want anybody of you or anybody of your known to develop cancer. Okay, That's Akanshi ma'am, may I interrupt? I would request all the parents, good evening and Jai Hind. I would request all the parents to fill up the feedback form. We will continue with the question answers undoubtedly, but all the parents are requested to fill up the feedback form. The link is given in the chat box. You can just click on the link and you will be able to fill the feedback form. all right. Ma'am, may I continue? Yes, please give 2 minutes to everyone to open the link and then we will continue with the question answers. All right, ma'am.
Your feedback form link Asking is about there in the chat quitline box. numbers. So those who want to help for quitting tobacco, I would like them to note the quitline number. So this is the national tobacco quitline number, and it's a toll-free number. So the number is 1800 112 356. So anybody can call on this number for help. So there are millions of people reporting this number. So you may immediately not get a call back, but you will definitely get a call back after some time. You can also give a missed call. Please note this number: 011 011 2290 1701. I'll just share it on this message box, so everybody can have this number: 011 0. I have shared both these numbers in the group. So till then, I find one actually very interesting question here, Please. which is asked by Mr. Navneet Singh. So he's asking, sir, if any drug addicted person wants to leave his or her addiction, and for this he or she is using other drug as a tablet or chewing gum prescribed by some pharmaceutical companies, then is it right way to get rid of with pan masala, tobacco, or smoking addiction? No. So getting rid of one habit and getting hold on a different habit is a wrong thing. And that's what I had discussed in my talk also, that tobacco addiction, to get de-addicted from tobacco, do not fall prey for nicotine chewing gums or nicotine gums or nicotine patches. The effect of tobacco that happens to the body is because of that rush of nicotine that is happening. So do not use those chewing gums, nicotine gums or nicotine chewing gums, to leave it. But yes, now there is second part. Somebody wants to leave chewing tobacco, and if he is using plain chewing gum or a toffee, yes, you can take help of that thing. You can put it in your mouth, or soft, or any churran, normal churran, not tobacco churran. वो आप अपने मुंह में रख सकते हैं, उसको रख के उसके साथ में आप यूज करिए उसको, to get avoid that craving. And वो craving जैसे जैसे थोड़े दिनों के बाद कम हो जाएगी. देखिए, आपको समझना है कि जब आप tobacco को छोड़ते हैं तो फर्स्ट टाइम आफ्टर द थर्ड डे, छोड़ने के सबसे पहले फर्स्ट डे पे और उसके बाद थर्ड डे पे सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है कि नहीं नहीं, आई मस्ट यूज इट बिकॉज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पसीना आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, कांप रहे हैं, ये होगा. बट यू हैव टू रेजिस्ट दैट, यूज समथिंग एल्स एंड यू कैन डेफिनेटली क्विट इट. उसके बाद थर्ड डे पे सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 7th to 10th डे में बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी. तो आपको पहले 10 से 15 दिन जो होते हैं बहुत ज्यादा अपने आप को रेजिस्ट करके छोड़ देना है. यू हैव टू लीव इट cold turkey. This is called cold turkey. And cold turkey method is that I have decided that I want to quit, and I quit it from now itself. And that is how quit. And that is how it helps. And everybody, when we discuss among everybody, yes, nahi karna chahiye. And even when friends tell that ye nuksandeh hota hai, a lot of people have quit that. And that's what we want in our society, that everybody realizes that they speak. अगर कोई ग्रुप में बोलेगा कि नहीं ये करना गलत है तो रुकेगा कौन? Thank you, sir. I think most of the questions have been answered, the ones that were in the chat box. And I would request everyone to fill in the feedback form. Meanwhile, I would request respected Principal Mr. C.K. Palit to throw light on the subject and thank Dr. Aseem Mishra for his valuable time. Thank you, Smriti ma'am. At the outset, I would like to share one thing, that tomorrow is the National Health Day. So health is very precious for each one of us.
and how to maintain good health from Sunbeam School, Mughal Sarai, we took a small initiative to arrange a session for all the parents, students, and the teachers. And when we're talking of a National Health Day and we are talking of health awareness, so definitely it comes to our mind that who can be the best person or the speaker to address to that situation as we are talking of health. And for this, we are very fortunate to get connected with Miss Sarika. So Sarika madam, thank you so much for taking our call to arrange this session today. And Ashwa is a foundation that is doing wonderful work to help the people, those who are suffering from different type of diseases and especially with cancer. Now, when we talk of Sarika madam, so Sarika madam, when we contacted, she mentioned that, sir, if you are interested to do a session on cancer, I think in Varanasi, the best speaker can be Dr. Asim Misra. And I got an opportunity to get in touch with Dr. Asim Misra over a mail. Sir, we are interested that you please come and help my students, my teachers, and everybody about the cancer. And within, I must have put it in record, within 5 minutes, I got the reply from sir that I am available for the session. Sir, we are really, really thankful to you, sir, for accepting our invitation to be with us today. I believe that each one of us present here today have got a new idea about that, how the cancer is so, you can say that a disease which is penetrating into our families because maybe of one of the reason, as sir very strongly straight about, that the use of tobacco, smoking and others. Apart from that, sir also mentioned that the lifestyle. So the lifestyle is very important for everyone to keep ourselves fit. And sir mentioned that for the students, because your students are here, 60 minutes of sporting activity is compulsory and essential for every child each day. Sir, I would like to mention here that in our school, definitely we give a lot of opportunity to our students to go to the field and play some games over there. And here again, sir mentioned that for the grown-ups like the adults, 30 minutes of physical activity and exercises is compulsory and is important. So keeping that in mind, two things are very important, that we have to maintain a lifestyle where tobacco is not in our in any forms, whether it is smoking or it is chewing of tobacco. I think that is how we can take a resolution to keep ourselves healthy and fit. Even sir mentioned that alcohol is also a factor which leads to the development of the cancer and its activities over there. So therefore, we have to keep a very strong lifestyle where we are not into tobacco, not into alcohol, but into good habits like doing the physical activities and the sports over there. Sir very appropriately mentioned over there that the cancer which we are talking of as a disease is not age specific. It can affect any group of people, any age group of this one. So for this, it is very important that everyone be aware of this one and make the people who are with us, maybe in our family, maybe outside, we all have to see that we encourage everyone to get rid of the evils of tobacco, evils of alcohol, and maintain good health. I must introduce to all the members here that sir is a specialist in surgery, oncology. So he's an oncology surgeon. And as sir mentioned that he had done a lot of these patients, they have
done the operations and many of them have got cured. We come across examples of the people, those who have overcome the diseases and they are maintaining a good life and healthy life. And for this, we are always thankful to our doctors for taking care of this one. And in the past 2 years, we have seen that how the doctors, they have done a great battle against the COVID also. And sir is having a dual responsibility against the COVID, against the cancer and all this thing. So more or less, the thing is that awareness is very important for us. And today's session is mostly on the awareness. And I have seen here that the children, they were very attentively listening to the talk which was given by Dr. Ashim. We are going to upload this today's talk in our school YouTube channel. So I will also ask students if anyone has missed the this beautiful presentation given by Dr. Ashim, so they may view the entire presentation in our school YouTube channel also. Sir, we are really thankful to you for your giving this precious time. I know that for you always you are busy with this one, but you agree that if here today so many students, they have listened, so many parents have listened, so you have done a great job in spreading that awareness that how to prevent the cancer. So it is better that we become more alert and take proper steps to keep this disease of the cancer away from anyone's life, and everyone should be maintaining good lifestyle also. Sir has shared the helpline numbers. If in case anyone is in need of any help, so they can call the helpline numbers. So somebody might be responding to this one. And I am told, I may be wrong, I'm not very sure. In this belt where we reside here, oral cancer is a prevalent disease because of the habit of chewing the tobaccos. And so therefore, and one more information I gathered through Dr. Sarika, that Miss Sarika rather, that chewing of tobacco is one of the reasons. The other reason is that the chuna and the katha which is used along with this tobacco are not hygienic, and they are also one of the reasons for the spread of the cancer. So therefore, people, they use either the katha or the chuna, which I'm surprised when madam told that these are artificially manufactured somewhere, the tuna, the lime. So the limestone, I mean to say. So all these things are also multiple agents for the cause of the cancer. Sir, I have a small question for you. If you can just, because children are here and everyone is here. So today we have mostly spoken about the oral cancers and what are the reasons for this one. Sir, can you just tell for this one, suppose the oral cancer, is it like that those who are not in the habit of chewing tobaccos or smoking, is there any possibility that they are also affected with the these oral cancers? If it is there, what is the maybe your statistically, what is the numbers, if you have come across anything? So those who use tobacco, 99% of the cancers that we see in oral cancer, they are tobacco related or some addiction related. Maybe it's smoking or tobacco, gutka, supari or whatever. Less than 1% are caused by causes other than these. So it may be genetic. That is one of the reasons that may cause cancer. But those genetic mutations are quite rare and that usually do not happen. And wo bhi tab hote hain. Those mutations also happen when you have a hit by tobacco. Suppose somebody is genetically predisposed to develop cancer. Yes. And that person gets a hit by a tobacco. And a tobacco addiction adds on to that. So tobacco and alcohol are the most common cause of oral cancer. That is one thing. It can also be caused by genetic mutations. It can also be caused by
poor oral hygiene or sharp teeth. Yes, sir. I was Sharp coming to teeth that point. can continuously hurt or cause an irritation, and that constant inflammation may develop cancer now, but that is also less than 1%. So it is not going to say that somebody is having a trauma and he's not using tobacco, so he's developing cancers. Not all of them. Yeah. And the other thing that you mentioned about tuna, I'll tell you, it's not about the hygiene. The calcium hydroxide that is there, that's the tuna thing. So the tuna is put on the tobacco to as an astringent. So astringent improves the surface availability of tobacco and nicotine absorption. So it increases the pH because of the hydroxide. So it increases the pH, and because of that increased pH, the tobacco absorption increases, and then you feel a higher kick, and that is why that tuna is used. Definitely, tuna itself is also harmful and it causes trauma and abrasions. That also increases the chances of developing cancer. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving an update. So another thing which, because children are here, so oral hygiene is also important. So therefore, children, you have to use this oral hygiene means brushing your teeth, having a proper hygienic activities that after you take the food, so wash your mouth properly. So all these habits also you have to maintain properly, so that you always avoid any type of inflation or infection inside your mouth also. So that also you have to take care of this one. So I am really thankful to all our parents also to be with us for this session today. We are really thankful to the students, those who had put up their questions. Due to maybe time constant, we are unable to take all the questions, but all the questions we are going to collect it and we'll share with Asim sir, and Asim sir will probably reply to that one and will be sharing with all the students. I'm thankful to our director ma'am, Shweta Kanodia ma'am. She is also with us, and she is I would like to say that she is the inspiration that we get connected with beautiful people like Sarika ma'am and Dr. Asim, and that is why we were able to host this beautiful talk show. And in fact, for the parents and the students also, we have thought that every month we will come up with a topic which will be mostly dedicated on the health and the hygiene, so that everyone will be more aware about that, how to maintain good health. And that is, it is not here I would like to say that we are restricting it for the students of Sunbeam School, Mughal Sarai. We are open to all the audience, those who are interested to join this type of talk show, because it is really you get an opportunity to listen to people like Dr. Asim Misra. So therefore, it is a great opportunity for us that Dr. Saab has agreed to spread awareness among the students. And again, it is based on the National Health Day. So we have started a series on the National Health Day. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for being a wonderful audience and listening to this talk show so nicely. Once again, thank you, Sarika ma'am, for being the person who had taken a lot of initiative to arrange this talk show. Thank you, everyone. And if any other questions are not there, we can end the session. And feedback forms, we request everyone to fill up the feedback forms, so that will help us to plan our next series of talks. There is a in the feedback form that what type of things the students or maybe the parents they would like to arrange this type of session, so that it will help us to design and decide the talk shows in that way. Once again, thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. I would like to say just one thing. Sir. So we can have in future a meeting in school per se, where people or students or teachers and even parents who may require help or counseling for people who use tobacco. And we can arrange some group sessions and awareness sessions for them and help them to quit tobacco, because this is going to go a long way. Sir, this is a very, very wonderful suggestion from you, and this will be a great help to many people, because sometimes, as you said, that
because it requires a lot of counseling. People, when they come across that somebody in the family, they are affected or infected or whatever with this type of thing. So some psychological support they also look into. Yes. So a medical counseling and a psychological support, if we arrange those type of sessions. And sir, when you had given the proposal, so I think we'll definitely see to this. If people, they are in need of any type of both medical consultation or psychological supports, so we'll get them connected with you, and we will request you to please provide the necessary help and support to them. And we'll be very, very fortunate to have you sometime, if we are organizing some health camp in the school, so that you can have, depending on your availability and all these things, so that you can visit our school and guide the people over there that how to means address to this type of situations in a better way. So thank you, Dr. Saab, once again, that you Thank you so had much. taken an initiative that if anyone in need of any type of assistance, they can approach to you. Definitely, if we come across such names or some persons, so we will try to reach you directly or through Sarika ma'am, so that we can provide whatever the help we can do it for them. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. So thank you all once again for being a wonderful participant. Tomorrow is National Health Day. So from Sunbeam School, Mughal Sarai, we wish everyone good health, safe health, and remain healthy and remain always happy and cheerful. Thank you once again, Asim sir and Sarika ma'am. Thank you, everyone.